सो हेलो एवरीवन, ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है. सो आवर क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 1/√1 minus x square with respect to sec inverse 1/√1 minus x square with respect to sin inverse 2x into √1 minus x square. ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन है. सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिफरेंशिएट this function with respect to this function. ठीक है, क्योंकि this is a function of x and this is also a function of x. So we have to differentiate this function with respect to this function. So let's say this function is u and let's say this function is v. Okay. So we have to find derivative of u with respect to v. यही फाइंड करना हम लोग को. ठीक है, so we have to find derivative of u with respect to v. ये निकालना है हम लोग को. ठीक है, एंड व्हाट इज u? u इज दिस फंक्शन एंड v इज दिस फंक्शन. ठीक है, सो ये भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे that u is sec inverse sec inverse 1/√1 minus x square and v is sin inverse 2x into √1 minus x square. ठीक है, ये फंक्शन को हम u एज्यूम कर लिया एंड ये फंक्शन को हम v एज्यूम कर लिया. वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v. ये निकालना है हम लोग को. ठीक है, सो ये जो फंक्शन है ये बेसिकली पैरामीट्रिक फॉर्म में. ठीक है, ये बेसिकली पैरामीट्रिक फंक्शन है. तो कैसे हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं? सो लेट्स से x इज अ फंक्शन ऑफ t. ठीक है, एंड लेट्स से y इज अ फंक्शन ऑफ t. सो लेट मी बेसिकली गिव यू a brief understanding of how to derivative parametric function. Let's say x is a function of t and y is a function of t and we have to find dy by dx. ये हम लोग को निकालना है. ठीक है, सो हम लोग dy by dx कैसे निकालेंगे? हम लोग बेसिकली we will divide dy by dt with dx by dt. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? dy by dt and dx by dt को डिवाइड करेंगे. सो इस तरह से हम लोग dx by dt निकाल सकते हैं. ठीक है, dx by dt निकाल सकते हैं. बट इन आवर केस वी हैव टू फाइंड du by dt. ठीक है, सो टू फाइंड du by dt व्हाट वी हैव टू फाइंड du by dx एंड वी हैव टू फाइंड dv by dx एंड इसको डिवाइड करना है तो हम लोग को मिल जाएगा du by dv मिल जाएगा हम लोग को. ठीक है, सो फर्स्ट वी विल फाइंड du by dx. फर्स्ट वी विल फाइंड du by dx. सो du by dx क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x. तो उससे पहले डेरिवेटिव करने से पहले, डिफरेंशिएशन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? इस फंक्शन को रिड्यूस करेंगे. ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. x की जगह को सब्स्टिट्यूट करने से फंक्शन अपने आप रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, और रिड्यूस होने के बाद जो फंक्शन मेरे को मिलेगा उसका डेरिवेटिव निकालना बहुत ईजी रहेगा. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल रिड्यूस दिस फंक्शन. So function is u equal to sec inverse 1/√1 minus x square. ये फंक्शन है. So we will put x equal to sin theta. अब इससे क्या होगा? sec inverse 1/√1 minus x की जगह क्या पुट करना है? sin theta पुट करना है. यहाँ पे x स्क्वायर है तो sin theta का स्क्वायर बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा. ठीक है, एंड वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा. सो वी विल पुट इन प्लेस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग क्या पुट करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे. एंड रूट कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा. सो 1 by cos theta. And what is 1 by cos theta? It is sec theta. 1 by cos theta is sec theta. So now sec of sec inverse sec x. We have this formula sec inverse sec x is x. So sec inverse sec theta क्या रहेगा? क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा. And we can find theta from this equation. Okay, if x equal to sin theta, so theta will be sin inverse x. Okay, theta will be sin inverse x. So we will put that here. Theta is sin inverse x.
Now our function was y equals to sec inverse 1 upon root over 1 minus x square. ये हम लोग का ओरिजिनल फंक्शन था. After substitution and simplification we found that that function is equals to basically sin inverse x, and now this is u function, this is u function, this is u function. Okay, and now we will find du by dx. Du by dx means derivative of function sin inverse x with respect to x. Okay, and derivative of sin inverse x, we know that derivative of sin inverse x is root over 1 upon root over 1 minus x square. This is derivative of sin inverse x. Similarly, we will do for the function v. Okay, we will reduce this function v. Function v is sin inverse 2x. Function v is sin inverse 2x root over 1 minus x square. Okay, this is our function. Again we will substitute x equal to sin theta. Okay, again we will substitute x equal to sin theta. So v function क्या बन जाएगा, sin inverse 2 sin theta multiplied by root over 1 minus sin theta square. Sin theta का whole square मतलब sin square theta. ठीक है. Now again we know that root over 1 minus sin square theta will be cos theta. So 2 sin theta multiplied by cos theta, and we have formula for sin 2 theta, which is 2 sin theta cos theta. So 2 sin theta cos theta will become sin 2 theta. ठीक है. Now this equation is in the form sin inverse sin x. Let's say 2 theta is x. ठीक है, तो ये basically sin inverse sin x के फॉर्म में है, and we know sin inverse sin x is basically x. ठीक है, so इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 थीटा आ जाएगा. And we can find again theta from this equation. So theta will be basically sin inverse x. So हम क्या करेंगे, थीटा की जगह sin inverse x पुट करेंगे, sin inverse x पुट करेंगे, and then we will find derivative of function v, which is basically 2 sin inverse x. ठीक है, so 2 is constant, वो तो बाहर आ जाएगा. So 2 multiplied by derivative of sin inverse x, and we know the derivative of sin inverse x is 1 upon root over 1 minus x square. So final answer is derivative of function v with respect to x is 2 upon root over 1 minus x square. ये derivative of function v. So we found derivative of u, which is 1 upon root over 1 minus x square, and we found derivative of v with respect to x is 2 upon root over 1 minus x square. Next we will put this in the formula of du by dv. Okay, du by dv. So du by dv is du by dx upon dv by dx. ठीक है, so du by dx is derivative of u with respect to x is 1 upon root over 1 minus x square, and what is the derivative of v with respect to x is 2 upon root over 1 minus x square. Okay, so basically ये जो डिनोमिनेटर है कैंसिल हो जाएगा ये. ठीक है, ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, so remaining is basically 1 by 2. So this is the derivative of u with respect to v. ठीक है, so basically derivative of this function, derivative of sec inverse 1 upon root over 1 minus x square with respect to sin inverse 2x root over 1 minus x square is 1 by 2. Okay, so this is the solution and the procedure to find the derivative of a parametric function. Okay, this is an example of a parametric function. This is an example of a parametric function, how to find the derivative of a parametric function, and this is the procedure to find the derivative of a parametric function. Okay, so this is for the video.